Welcome to Traffic. In today's video, I am going to discuss the question bank questions of chapter 1. The chapter name is Introduction to Computer Network. So here first MCQ question which will come for 1 mark. Number 1, hardware address is known as, the correct option will be MAC address. Then number 2, MAC address stands for, it will be Media Access Control. Then number 3, which of the following devices connects a LAN to a MAN? Answer will be router. Number 4, what is the full form of ARP? It is Address Resolution Protocol. Number 5, which device is required to connect multiple heterogeneous network? The correct answer is router. Then number 6, what is the largest type of computer network? It is WAN. WAN is the largest one and PAN is the smallest one. Number 7, which protocol transfer encrypted data instead of plain text? It is HTTPS. HTTPS always encrypt the data and transfer it to over the network. And if we throw the HTTP, it is transferred as a plain text. Then number 8, how many bytes are reserved for OUI in a MAC address? In MAC address, there are 3 bytes are reserved for OUI, or we can say 24 bits. Now, if we say in bits, then it will be 24, and if we say in bytes, it will be 3, because if we 8 bits make a byte, if we convert it to byte, then it's become 3. Then number 9, IP address can be automatically assigned if the network is connected. It will be DHCP server. DHCP. Then fill in the blanks. Number 1, it is a set of computer and other unit that are connected with each other. It will be computer network. Number 2, in a computer network, this can be shared among the connected computers. It will be information or resources. Number 3, coaxial cable, twisted pair cable, optical fiber cable are some example of, it will be wired technology. Number 4, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, etc. are example of wireless technology. PAN stands for Personal Area Network, LAN stands for Local Area Network, MAN stands for Metropolitan Area Network, WAN stands for Wide Area Network, ISP stands for Internet Service Provider, MS stands for Media Access Control, and number 11, the host name command is used to display the computer name or name of the computer. Anyone you can write. Number 12, the length of IPv4 and IPv6 is given in byte. So if we write in bit, then we can write 32 bit and 128 bit, but if we write in bytes, it will be 4 bytes and 16 bytes. If we divide 32 by 8, the answer is 4, and if we divide 28 by 8, the answer is 16. That's why we have to write 4 bytes or 16 bytes. Number 13, an access point is used to connect. It will be wireless network. Number 14, the ping command is used to verify the connectivity between two computers. Number 15, HTTPS transfer encrypted data. Then number 16, this offers network range of about 10 meters from central device to other communicating device. It is PAN. PAN gives us only 10 meter connectivity from the server or from the central device. Like if I turn on my mobile hotspot, then other device within 10 meter of radius only can connect. If some device go more than 10 meters, it might not get connected. Now we'll come to the short questions. Page number 5
60 in your question bank. Whoever have question bank, you can see the question from your question bank. Now let's come to the question number 11. The length of IPv4 address. What is the length of IPv4? If we write in bytes, it will be 4 bytes, and if we write in bits, it will be 32 bits. Then the length of IPv6, if we write in bytes, it is 16, and if we write in bits, it will be 128 bit. And number 13, name the server which is need to acquire an automatic IP address. It is DHCP server. And number 14, without what a computer cannot be connected to a network. It is NIC, network interface card, or somewhere it is also given as network interface controller. Number 15, with what an external NIC are automatically connected. It will be USB port. Then what is a hub? A hub is a networking device that connect the computers or other devices together. And there is also switch. For switch you will write a switch is a networking device that connect the computers or other devices together. Switch also contains some routing information, but hub does not contain any routing information. It only connect the computers. Number 17, give an example of WAN. It is internet. Now we'll move to the 2 marks question, that is short type questions. Here are the directly answers I am writing. If you have question bank, you can open page number, as I said, 560, and you can follow the question from there, or even you can see it from here also. The first question is, what is a computer network? We can write this way: a computer network is a set of computer and other units that connected with each other. Number 2, how is the interconnection of computer in a network made up of? The answer you can write this way: the interconnection of computers in a network is made up of telecommunication network technologies based on physically wired or wirelessly. Number 3, give 2 example of wire technology. The answers can be twisted pair cable and optical fiber cable. 2 example of wireless technology, it is Wi-Fi and Bluetooth. Then number 5, what are the classification of a computer network based on connecting technology? It is wired, wireless, or hybrid. Write a short note on PAN. Can write this way: PAN stands for personal area network. PAN are normally set up for individual within a limited area such as a room. PAN offers a network range of 10 meters from a central device to other communicating devices. For example, someone can set up a PAN between his laptop, printer, mobile, or other electronic gadgets. Then write a short note on LAN. You can see it from page number 2 from your computer science book. Then number 8, write the difference between LAN and PAN. Now I have already explained LAN. It is used to connect the computers within a large geographical area, which is a building. And PAN, it is used to connect the computers within a small geographical area such as a room. So first difference can be this one. And the second difference, when we transfer data through PAN, then the speed is very high, but if we transfer data through LAN, it can be slow, depend on the number of computer to the LAN. If I say in Hindi, और एक्चुअली व्हाट हैपन, जब हम लोग लैन में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो डाटा थोड़ा स्लो स्पीड होता है. अगर लैन में ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है तो स्लो ट्रांसफ़र होगा. एंड एस पैन में सिर्फ हमारा मोबाइल और कंप्यूटर ही कनेक्टेड होगा, थोड़ा सा ही डिवाइस कनेक्टेड होगा, तो कुछ भी ट्रांसफ़र करने से वेरी फास्ट ट्रांसफ़र होता है. और लैन का रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे एक बिल्डिंग हो गया. और पान का रेंज बहुत छोटा होता है, जैसे एक स्मॉल रूम. एंड और वो भी पैन के लिए हमें कुछ भी नेटवर्क सेटअप नहीं करना होता है, पर लैन के लिए हमें नेटवर्क सेटअप करना होता है. सो ये सब डिफरेंस है. यू कैन राइट, एग्ज़ाम में भूल जाने से भी खुद बना के लिख सकते हो. जैसे वी डोंट हैव टू सेटअप एनी नेटवर्क फॉर पैन, फॉर लैन वी हैव टू सेटअप अ नेटवर्क. और फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ मैन. यू कैन सी फ्रॉम पेज नंबर 3. फ्रॉम देयर यू कैन मेक एंड राइट. नंबर 10, राइट द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड man.
Now land ownership is private, means most of the land are owned by individuals. Sometimes it may be individual schools, sometimes it may be individual office and so on. But man, sometimes it can be a private or sometimes it can be a public. And when we design man, as their number of computer are less, it is easy to set up. But as in man, the number of computer are more, and even we have to connect the LAN also together, so here setup is very difficult. मतलब LAN में क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर बहुत कम होता है तो सेटअप करने में इजी होता है, बट मैन में कंप्यूटर ज़्यादा होता है. इवन हम लोग को LAN को भी कनेक्ट करना होगा तो वहाँ पे सेटअप थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. और LAN का ओनरशिप मतलब मालिक इंडिविजुअल होता है. कोई एक आदमी होता है, या तो आदमी होगा या तो कोई प्राइवेट कंपनी हो सकता है. पर मैन का ओनर समटाइम इंडिविजुअल भी हो सकता है, समटाइम पब्लिक भी हो सकता है. जैसे मेरा एक प्राइवेट कंपनी हो गया तो मेरा कंपनी का ब्रांचेस सिटी का डिफरेंट जगह में है और मैं मैन के थ्रू कनेक्ट किया मेरे ऑल द ब्रांचेस को, तो उसका ओनरशिप मैं हूँ तो वो प्राइवेट हो गया. और जैसे गवर्नमेंट बैंक हो गया और एक FM स्टेशन और केबल टीवी स्टेशंस, वहाँ पे क्या होता है कोई भी कनेक्ट कर सकता है, तो वहाँ पे ओनरशिप हो गया पब्लिक. सो लैंड का डायरेक्ट इंडिविजुअल ही होता है, पर मैन में कभी पब्लिक भी हो सकता है, कभी प्राइवेट भी हो सकता है. और डाटा ट्रांसफ़र रेट लैंड का थोड़ा बहुत अच्छा होता है, बट मैन में क्या होता है, एज नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस इट विल बी स्लोअर कंपेयर टू लैंड. देन राइट द डिफरेंस बिटवीन LAN एंड मैन. LAN और मैन का बीच में डिफरेंस. LAN एंड WAN का बीच में डिफरेंस. अब LAN हो गया एक छोटा सा जियोग्राफिकल एरिया के लिए जैसे कि बिल्डिंग, बट WAN हो गया पूरा वर्ल्ड के लिए. लाइक LAN कैन कनेक्ट द कंप्यूटर विथ इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, बट WAN कैन कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ large geographical area. For example, it can be a continent, a country or many cities. But man, it can connect only small geographical area, for example a building. So क्या होता है वहाँ पे LAN में नंबर ऑफ कंप्यूटर बहुत कम होता है, पर WAN में there are millions of computer. So what happen, the speed of LAN will be much faster than man, क्योंकि मैन में कंप्यूटर ज़्यादा होता है और LAN में कम होता है. और एक होता है ओनरशिप. LAN का ओनरशिप ज़्यादातर प्राइवेट ही होता है और WAN का ओनरशिप प्राइवेट नहीं होता है, वो पब्लिक होता है. जैसा इंटरनेट का कोई मालिक नहीं, वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक है. नाउ व्हाट इज़ अ होस्ट नेम? होस्ट नेम इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर और एनी कनेक्टेड डिवाइस टू अ नेटवर्क. सम पीपल ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ कंप्यूटर नेम. व्हाट इज़ एन IP address? You can write this way. An IP address is a numerical label that is assigned to network devices to identify them uniquely. There are two types of IP address, IPv4, or you can write also this way, Internet Protocol version 4 and Internet Protocol version 6. IP address can be assigned to the computer manually or it also can be set by a server which will be set automatically. अब IP क्या होता है, जैसे हम लोग का फ़ोन नंबर जैसा हो गया. जब हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करेगा तो क्या होता है, कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, सो दैट हम कुछ भी करें तो उसको ट्रैक किया जा सके. नहीं तो क्या होगा, अब मुझे कुछ फाइल सेंड करना है मेरे फ्रेंड को, अगर मेरा फ्रेंड का कंप्यूटर नेम किसी एक के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेम नेम, ये तो होगा ही क्योंकि वॉल में बहुत सारा नेम सेम होता है, तो फाइल सेंडिंग में प्रॉब्लम होगा. तो इसलिए क्या होता है, जब भी हम लोग कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट कर देते तो कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस मिलता है. कभी हम लोग खुद सेट करते हैं तो कभी ऑटोमेटिकली मिल जाता है. जैसे हम लोग का मोबाइल में जब हम डाटा ऑन करते हैं तो मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो मोबाइल का एक IP एड्रेस होता है, तो वो तो हम लोग सेट नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हम लोग के ISP हमको प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे होता है. वो क्यों होता है, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा डिवाइस को, इसीलिए वो IP एड्रेस इम्पॉर्टेंट होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेस, इट इज़ IPv4 एंड IPv6. और लेंथ also you can write IPv4 is 32 bit and IPv6 is 128 bit. Same thing, if you write in byte, you will write IPv4 is 4 bit or 4 bytes and IPv6 is
16 bytes. Then IPv4 address are how we write IPv4 address. IPv4 address are most often written in dot decimal notation, which contain 4 segments of 8 bits each. For example, you can write any address. For writing the address, you please remember that the number should be less than 255 and between 0 to 255. You can write any number here, and it should be in 4 groups, and the groups should be separated by dot. अब IPv4 का एड्रेस का एग्जांपल लिखने के लिए क्या करना है, कोई भी नंबर लिखना है जो कि 255 से 0 to 255 रेंज का होगा, और सार ग्रुप में नंबर लिखना है और नंबर को डॉट और फुल स्टॉप से सेपरेट करना है. जब नंबर लिखेंगे तो हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि नंबर को थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. पहले बड़ा वाला नंबर, उसके बाद एकदम लास्ट में छोटा वाला. ऐसे लिखने से करेक्ट हो जाएगा. जैसे तुम अगर IP एड्रेस ऐसे लिख दिया 1.45.90.180, तो नॉर्मली ऐसी तरफ का IP एड्रेस नहीं होता है. हो भी सकता है, क्या पता, पर हम लोग ऐसे नहीं लिखते. तो ये ध्यान रखना, पहले बड़ा वाला नंबर डालना, उसके बाद छोटा वाला, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में. नाउ हाउ वी असाइन IPv6 एड्रेस. IPv6 are represented as 8 group of 4 hexadecimal digits, means in each group will contain 4 number and these are hexadecimal number, and it will be in 8 groups, and each group will contain 16 bit of information. And here, and remember, IPv4 they are separated by dot, but here it is separated by colon. Colon means double dot. Okay, now let's come to question number 8. Question number 18, sorry, not 8. Why IPv6 is needed? Now see, in IPv4 our range is from 0 to 255. So there, what happened with this combination, we can assign IP address to some limited number of computers. Now as in the world the number of computer or electronic gadget are increasing day by day. Each day someone buying some new electronic device and they are connecting it to the internet. Now everything is connected to the internet, like our washing machine, our AC, our car, means almost everything. So each device will have some IP addresses. So what happened, at present we don't have we are in run out of IPv4 addresses. That's why the computer scientists, they developed a new addresses, IPv6. There we can add more computers. At least till 50-60 years we don't have problem with IPv6. Whatever device we can connect with it using this, especially for IoT, means Internet on Things. Internet on Things means, suppose I have a washing machine, it have a internet option, means from my mobile I can control my washing machine from anywhere. Then what happened, my washing machine will be connected to a internet, and at that moment it will call as IoT. मतलब क्या होता है, अब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लाइट हो गया, फैन हो गया, वो सब हम लोग अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. नॉट ऑल, स्मार्ट वन. तो जब हम लोग अपने डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे या तो इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उनको एक यूनिक एड्रेस मिलेगा, और वो एड्रेस नॉर्मली IPv6 से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि IPv4 में ऑलरेडी जितना भी एड्रेस था सब ख़त्म होने के कगार में है, इसीलिए IPv6 यूज़ होता है. और IPv6 स्पेशली फॉर IoT के लिए यूज़ करते हैं. IoT मतलब इंटरनेट ऑन थिंग्स, जिससे कुछ हम लोग का रेगुलर यूज़ का सामान हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फिर फ्रिज हो गया, AC हो गया, वो सब हम लोग अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं. तो जब कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, वो हमारा जो गैजेट्स है वो वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा, और कनेक्ट होने के लिए उसको IP एड्रेस चाहिए होगा, और वो एड्रेस हम लोग IPv6 के थ्रू करेगा. Now question number 19, write the procedure to assign IP address to a computer. The procedure to assign IP address to a computer by the user varies from OS to OS. Most of the OS provide graphical user interface to set up IP address. However, in server-centric OS such as Linux, we need to write some command to set up IP address. अब क्या होता है,
हर ओएस का मेथड डिफरेंट होता है। जैसे अगर मेरे पास मैकबुक है तो वहाँ पे आईपी एड्रेस सेट करने का स्टेप्स अलग होगा। अगर मेरे पास विंडोज़ एक्सपी है वहाँ पे मेथड अलग होगा। अगर मेरे पास विंडोज़ 11 है तो वहाँ पे भी अलग होगा। और अगर मेरे पास उबंटू और कुछ ऐसे ओएस है वहाँ पे भी अलग हो सकता है। पर अगर मेरे पास कुछ सर्वर वाला ओएस है जैसे कि लिनक्स का रेड हैट हो गया, काली हो गया, वो सब होने से क्या वहाँ पे हम लोग का GUI नहीं मिलेगा। मतलब वो जो ऑप्शन बटन यहाँ पे प्रेस करो, वहाँ पे प्रेस करो, नेक्स्ट दबाओ, वो सब नहीं होगा। वहाँ पे डायरेक्टली हमें कुछ कमांड लिखना होगा। नेटवर्क की कमांड कुछ होता है, वो कमांड लिख के हम लोग आईपी सेट कर सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द ओएस जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं जैसे हो गया मैक, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, वहाँ पे हम लोग का एक GUI मिलेगा, कुछ बटन मिलेगा, कुछ विंडो मिलेगा, वहाँ पे हम लोग क्लिक करके आईपी को सेट कर सकते हैं। नंबर 20, give a short note on MAC address. MAC address stands for Media Access Control. It is a unique identifier to assign to an NIC. MAC address is represented as 6 group of 2 hexadecimal digits separated by hyphen, colon, sometime without any separator. MAC address is assigned by hardware manufacturer and cannot be changed by a user. अब MAC address, अब क्या होता है, जैसे आईपी एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, पर आईपी एड्रेस में कुछ कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग आईपी एड्रेस खुद सेट कर सकते हैं, तो 2 कंप्यूटर एक साथ एक आईपी सेट कर दिया तो आईपी तब क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। जब हम लोग को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ट्राई करेंगे तो कौन से कंप्यूटर को सेंड करेगा उसका कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर जो भी कंपनी हार्डवेयर बनाते हैं, मोबाइल, लैपटॉप ये सब बनाते हैं, वो लोग जब बनाने के टाइम में डिवाइस को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करते हैं। जैसे जब तुम लोग कार, बाइक या कोई भी गाड़ी खरीद लो, वहाँ पे एक इंजन नंबर और सेसिस नंबर होता है, वो हमेशा यूनिक होता है। उसके थ्रू तुम्हारे गाड़ी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में एक मैक एड्रेस होता है। अगर तुम्हें मोबाइल का मैक एड्रेस देखना है तो यू कैन टाइप दिस वन, स्पेशली फॉर सैमसंग *#06# और स्टार समथिंग लाइक दैट, देन यू विल गेट योर मैक एड्रेस ऑफ योर मोबाइल। तो अभी ये क्यों चाहिए, तो मैक एड्रेस ऐसे हमेशा यूनिक होता है तो यूज़र इजीली चेंज भी नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग डिवाइस को जब कंप्यूटर में कनेक्ट होगा, इंटरनेट में कनेक्ट होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेस एक ट्रस्टेड सोर्स नहीं है और आईपी एड्रेस हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे वीपीएन यूज़ के हम लोग आईपी को बाईपास कर सकते हैं, तो हम लोग अपने एड्रेस को हाइड कर सकते हैं। पर मैक एड्रेस में क्या होगा, हम लोग का लोकेशन आइडेंटिटी कभी भी हाइड नहीं होगा। इसलिए मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के लिए। So for today this much only. We have few more questions from chapter 1, some 3 marks question and some 2 marks questions. We will discuss them in next video. I hope you have understood the answer, and if I've made any mistake in these answers you can write in comment section. Thank you for watching. See you in a new video. Till then, take care and bye.